Now we are moving on to questions based on upstream and downstream. So question number 21 says a boat goes 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. It can go 12 km upstream and 36 km downstream in the same time in 6 hours. Find speed of boat in still water and speed of the stream. Now upstream here means the boat is going against the flow of water, and downstream means the boat is going in the direction of the flow of water. So let the speed of boat in still water be x. Speed of boat in still water means which is not moving, x km per hour, and speed of stream is y km per hour. They are the actual speeds of boat and the stream. Now while going upstream the speed of boat will change. जब हम upstream जाएंगे, मान लीजिए बोट अपस्ट्रीम जा रही है, तो क्या होगा कि सिंस इट इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी. बोट की स्पीड स्टिल वाटर के कंपैरिजन में जब अपस्ट्रीम जाएंगे तो उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी. तो दिस इज द स्पीड ऑफ बोट while going upstream. So this is equal to speed of boat in still water minus boat speed of stream, that is equal to x minus y. Clear? Remember one thing, कि speed of boat will always be greater than speed of the stream. Similarly we will find the speed of boat while going downstream. Downstream में speed of boat जो है वो increase हो जाती है क्योंकि वो पानी की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड के साथ ही सेम डायरेक्शन में जा रही है. तो सिंस दोनों का डायरेक्शन सेम है तो बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. किस तरीके से निकालेंगे हम लोग? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर. सो लेट अस सॉल्व फॉर केस 1. पहले केस 1 को देखते हैं हम लोग. Distance traveled upstream by boat is 16 kilometers and distance traveled by downstream boat in downstream is 24 kilometers. So time taken upstream will be equal to, time का फॉर्मूला होता है distance upon speed. So this is equal to 16 upon upstream speed है x minus y. So this is your 16 upon x minus y hours. Now downstream, distance traveled downstream is how much? Distance traveled downstream is 24 kilometers. So this is equal to 24 kilometers. Time taken will be equal to, time taken downstream will be equal to distance 24 downstream speed x plus y. So this is your 24 upon x plus y hours. Next, total time taken is 6 hours. Total time taken means time taken upstream plus downstream is 6 hours. So time taken upstream plus time taken downstream is equal to 6 hours. So time taken upstream is 16 upon x plus y plus 24 upon x minus y. So here it is x minus y, 16 upon x minus y. So it is your 16 upon x minus y plus 24 upon x plus y is equal to 6. So simplified form में cancel out होगा तो 2 8 16 upon x minus y plus 12 upon x plus y is equal to 3. This becomes the first equation. Now let us move on to case 2. Case 2 says this distance traveled by boat upstream is equal to 12 kilometers and this time taken will be equal to, time taken upstream will be equal to distance is 12 upon x minus y hours. Now distance traveled by boat upstream downstream, this is equal to 36 kilometer given in the question. So time taken will be equal to
36 is the distance, 36 kilometer is the distance upon x plus y hours. So time taken, total time taken is 6 hours. So time taken upstream plus time taken downstream is equal to 6 hours. So I will be writing it as 12 upon x minus y plus 36 upon x plus y is equal to 6 hours. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1. दिस बिकम्स द सेकेंड इक्वेशन. So here we have two equations, 8 upon x minus y plus 12 upon x plus y is equal to 3. This is the first equation, and second equation is 2 upon x minus y plus 6 upon x plus y is equal to 1. So let 1 upon x minus y is equal to a and 1 upon x plus y is equal to b. So this equation becomes 8a plus 12b is equal to 3. Let it be 3, third equation, and this becomes 2a plus 6b is equal to 1. This is the fourth equation. Now solving these equations, solving 3 and 4, we get a is equal to 1 upon 4 and b will be equal to 1 upon 12. Now a means what? 1 upon x minus y, and b means 1 upon x plus y. So this implies that x minus y is equal to 4. This becomes the fifth equation, and x plus y is equal to 12. This becomes the sixth equation. When we solve these two equations, on solving fifth equation and sixth equation, we will get x is equal to 8 and y is equal to 4. This implies that we can say the speed of boat in still water is equal to x means 8, so 8 km per hour, and speed of boat, speed of stream, not boat, speed of stream is equal to 4 km per hour. So you can see the speed of boat is more than the speed of stream, so it will always be more than the speed of stream. Okay, now question number 22. A boat goes 12 km upstream and 40 km downstream in 8 hours. It can go 16 km upstream and 32 km downstream in the same time. Find speed of boat in still water and speed of the stream. So जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में एज्यूम किया था वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी चलेगा. So let the speed of boat in still water is x km per hour and speed of stream is y km per hour. So remember one thing again, x will be more than y here. Now speed of boat while going upstream. तो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसे? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो ये हो गया आपका x माइनस y किलोमीटर पर आवर. नाउ स्पीड ऑफ बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम. तो यहाँ पे जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. वो कैसे फाइंड आउट होगा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर plus speed of stream. So that is equal to x plus y km per hour. Now case 1, 12 km upstream plus 40 km downstream in 8 hours. So distance traveled while going upstream, that is equal to 12 kilometers. So time taken will be equal to time taken by boat upstream is equal to distance upon speed x minus y.
So this is equal to 12 upon x minus y hours. Now distance traveled while boat by going डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो टाइम टेकन हो जाएगा उसका 40, डिस्टेंस है, स्पीड उसकी x प्लस वाई है, सो 40 अपॉन x प्लस वाई आवर्स. नाउ टोटल टाइम टेकन इज 8 hours. So time taken upstream plus time taken downstream is equal to 8 hours. So time taken upstream is 12 upon x minus y plus 40 upon x plus y is equal to 8 hours. So reduced equation will be equal to 4 3 is 12, 4 से cancel out हो रहा है, so this is 3 upon x minus y, 10 upon x plus y is equal to 4 2s are 8. So this is the reduced equation, simplified equation. So let us move on to case 2. Now distance traveled by boat upstream is 16 kilometers. तो अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर जा रही है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? फिर टाइम का फॉर्मूला बनेगा हमारा अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस इज 16 अपॉन x minus y hours. Now distance traveled while going downstream. तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस हमारा है 32 किलोमीटर का, तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू व्हाट? अगेन सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो दिस इज इक्वल टू 32 upon x plus y hours. Now total time taken is 8 hours, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में रिटर्न इन द सेम टाइम. इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन सेम टाइम मीन्स 8 hours. So this is equal to 16 upon x minus y plus 32 upon x plus y is equal to 8. So this equation can be written as 2 upon x minus y plus 4 upon x plus y is equal to 1. This is the second equation. Okay, this is the second equation equal to 1. Now how to solve them? तो जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे. 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को b लेंगे एंड वी विल सॉल्व देम. तो सॉल्व करने पे एट द एंड वी विल गेट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2. सो स्पीड ऑफ बोट in still water is equal to 6 km per hour and speed of river yani stream is 2 km per hour. So this is the answer. A sailor goes 8 km downstream in 40 minutes and return in 1 hour. Now here downstream का टाइम अलग दिया हुआ है, रिटर्न्स मीन्स अपस्ट्रीम का टाइम भी अलग अलग दिया हुआ है, यानी यहाँ पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों अलग अलग केस में सॉल्व होंगे. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट. सो लेट अस अज्यूम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x km per hour and speed of current is y km per hour. So the speed of boat while going upstream will be equal to x minus y km per hour and speed of boat while going downstream will be equal to x plus y km per hour. तो ये तो हमारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के में जब भी होगा तो सेम रहेगा. ओके, सो नाउ केस 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by boat downstream is 8 kilometers and time taken is 40 minutes.
सो वी कैन से हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस इज 8, स्पीड डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई, टाइम टेकन इज 40, सो इनटू 40 अपॉन 60. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 8 इज इक्वल टू x प्लस वाई. अब ये 4 और 6 को हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो दिस इज इनटू 6 अपॉन 4. 4 2 is 8, so you get x plus y is equal to 12. This is the first equation. Now case 2. Distance traveled downstream हो गया है. Now distance traveled upstream will be equal to same. Return बोला है तो रिटर्न में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा. सो दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर्स. डाउनस्ट्रीम 8 किलोमीटर गए थे तो अपस्ट्रीम भी हम 8 किलोमीटर ही जा रहे हैं. टाइम टेकन इज 1 hour while going upstream. So again same formula, distance is equal to speed into time. So distance is 8, speed is upstream x minus y into 1. So we get x minus y is equal to 8. This is the second equation. So solving first and second, now this is quite easy. X will be equal to 10 and y is equal to 2. So we can say speed of boat in still water is 10 km per hour and speed of current is 2 km per hour. So remember one thing, यहाँ पे हमें डाउनस्ट्रीम का टाइम अलग दिया हुआ था और रिटर्न यानी अपस्ट्रीम का टाइम 1 hour अलग दिया हुआ है. तो इसको मैं दो केस में सॉल्व कर रहा हूँ. केस 1 फॉर डाउनस्ट्रीम एंड केस 2 फॉर अपस्ट्रीम. ओके. Now questions based on area of a rectangle. If in a rectangle the length is increased and breadth is reduced by 2 meters each, the area is reduced by 28 square meter. Length is reduced by 1 and breadth is increased by 2, the area increases by 33. Find the length and breadth of the rectangle. So let us assume length of the rectangle as x and breadth as y. Now since length is x and breadth is y, so area will be xy. So let the length of the rectangle be is equal to x meters, breadth is equal to y meters, so area of rectangle is equal to xy meters square. Now first case, length is increased by 2 meters. So and breadth is reduced by 2 meters each. So new length will be equal to, new length of the rectangle will be equal to, since it is increased by 2 meters, so it is your x plus 2 meters. Similarly breadth is reduced by 2 meters, तो नया breadth हो जाएगा हमारा rectangle का y minus 2 meters. So new area of the rectangle will be equal to x plus 2 into y minus 2 meter square. Now क्वेश्चन में कहा है एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 28 स्क्वायर मीटर. सो जो नया एरिया है x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 वो ओरिजिनल एरिया से 28 लेस हो जाएगा. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 28. दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड. माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 24. ये 4 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया. सो वी गेट माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 12. This is the first equation. Now next case, second case. Now in this case length is reduced by 1 and breadth is increased by 2 meters. So new length will be equal to x
minus 1 meter, and new breadth will be equal to y plus 2 meter. New area will become x minus 1 into y plus 2 meter square. Now area is increased by 33. क्वेश्चन में mentioned है हमारे पास कि area increases by 33. So we can write it like this. और नया एरिया जो है x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया से 33 ज़्यादा है. तो अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे हमारे पास, तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 33. तो एक्स वाई एंड एक्स वाई गेट कैंसल्ड, तो हमारे पास आ रहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35. This becomes the second equation. Now solving this first and second equation, we will get, solving first and second, we get. Now question number 25. Area of rectangle gets reduced by 80 square units if length is reduced by 5 and breadth is increased by 2 units. If we increase the length by 10 and decrease the breadth by 5 units, the area is increased by 20 units. ठीक है. Find the length of the breadth of the rectangle, length and breadth of the rectangle. So let the length of the rectangle be x units and breadth is equal to y units. So area will be equal to x into y, that is xy square units. Now case 1. Length is reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units. So new length will be equal to, new length of the rectangle is equal to x minus 5 units. New breadth of the rectangle will be equal to y plus 2 units. So area will be equal to length into breadth. So you get x minus 5 into y plus 2 square units. Now according to question, it is given area of rectangle gets reduced by 80 square units. इसका मतलब ये है कि जो हमारा नया एरिया है x minus 5 into y plus 2, ये ओरिजिनल एरिया से 80 लेस हो जाता है. सो लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80. इस एक्स वाई एंड एक्स वाई गेट कैंसल्ड, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस 70. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. लेट इट बी 1. Now next case. Now length is increased by 10 units. Length is increased by 10 units and breadth is decreased by 5 units. So new length will be equal to x plus 10 units and new breadth will be equal to y minus 5 units. So new area will be equal to, area of the rectangle will be equal to x plus 10 into y minus 5. Now according to question, area is increased by, the area increases by 50 square units. So we can write it like this, x plus 10 y minus 5 is equal to original area से 50 ज़्यादा है. So we can say x into y minus 5x plus 10y minus 50 is equal to xy plus 50. xy and xy get cancelled, so this can be written as minus 5x plus 10y is equal to 50 उधर शिफ्ट होगा तो 100 आएगा.
So this is your minus x plus 2y is equal to 20. This is the second equation. Now solving first and second, we write it like this. First and second equation, we get x is equal to 40, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 और y की वैल्यू आएगी हमारे पास 30. So length of the rectangle is equal to 40 units and breadth of the rectangle is 30 units. This is 30 units. Okay. Now question number 26. 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken by one man alone and one boy alone to finish the work. So now this question is based on time and work. So let time taken by one man to complete a work be x days. Now if one man completes a work in x days, then his one day work will be equal to, one man's one day work will be equal to, now since he completed in x days, तो one day work will be 1 upon x, यानी एक दिन में वो फिर 1 upon x part work complete कर देगा. Similarly, one boy's time taken by one boy to complete a work is y days. Time taken by one boy to complete a work is equal to y days. So his one day work will be equal to, one boy's one day work will be equal to 1 upon y. Since he completes it in y days, तो उसका one day work हो जाएगा 1 upon y. Now let us solve for case 1. तो हमें अभी फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन बनानी है. Now 8 man's one day work. अब one man's one day work is 1 upon x. So 8 man's one day work will be 8 into 1 upon x, that is equal to 8 upon x. Similarly, 12 boys one day work will be equal to 12 into 1 boy's one day work, that is 1 upon y. So this is your 12 upon y. Now 8 men and 12 boys can finish a work in 10 days. यानी 8 men plus 12 boys one day work will be equal to, since they are taking 10 days to complete the work, so their one day work will be equal to 1 upon 10. So 8 men's one day work is 8 upon x, 12 boys one day work is 12 upon y, this is equal to 1 upon x. 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो 80 upon x plus 120 upon y is equal to 1. So this is the first equation. Now case 2. Now second condition में हमने कहा है 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. तो 6 man, तो 6 man's one day work कितना हो जाएगा? That is 6 into 1 upon x, that is equal to 6 upon x. Similarly, 8 boys one day work will be 8 times of 1 boy's one day work, 8 into 1 upon y, that is equal to 8 upon y. Now they completed in 14 days, यानी 6 men and 8 boys complete a work in 14 days. So their one day work will be equal to what? 6 men plus 8 boys one day work will be equal to, since they complete it in 14 days, तो one day में कितना complete होएगा? 1 upon 14th work. So this can be written as 6 upon x plus 8 upon y is equal to 1 upon 14. This implies that this can be written as 6 into 14, 84 upon x plus, this can be written as, so
84 upon 8 into 14, this is equal to 112. 112 upon y is equal to 1. This becomes the second equation. Now solving first and second, we get x is equal to 140 and y is equal to 280. So this implies that we can say one man can complete a work in 140 days and one boy can complete a work in 280 days. Now question number 27, same type का question है. 2 women, 5 men can together finish a piece of work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the embroidery and that taken by 1 man alone. So let time taken by one woman to complete a work is equal to x days. So her one day work will be equal to, since she completes it in x days, so her one day work will be equal to 1 upon x. Similarly, we can assume time taken by one man to complete a work is equal to y days. So one man's one day work will be equal to 1 upon y. So what is the case one then? 2 women's one day work will be equal to, since one women's one day work is 1 upon x, so 2 women's one day work will be 2 into 1 upon x, that is your 2 upon x. 5 men's one day work, 5 into 1 upon y, so you get 5 into 1 upon y, that is 5 upon y. So they complete the work in how many days? 4 days. 2 women and 5 men can finish a work in 4 days. So their one day work will be equal to 2 women's 5 men's one day work will be equal to 1 upon 4. ठीक है? Because they completed in 4 days. So this can be written as 2 upon x plus 5 upon y is equal to 1 upon 4. So cross multiply करेंगे तो 8 upon x plus 5 4 is 20 upon y is equal to 1. This is the first equation. Now case 2. 3 women's one day work will be equal to, we have got 3 women and 6 men and finish it in 3 days. So 3 women's one day work is equal to 3 into 1 upon x, that is equal to 3 upon x. And 6 men's one day work will be equal to 6 into 1 upon y, that is equal to 6 upon y. Now they completed in 3 days. Yani 3 women and 6 men can finish a work in 3 days. So 3 men plus 3 women plus 6 men's one day work is equal to 1 upon 3. They completed in 3 days, so we can write it, their one day work will be equal to 1 upon 3. So 3 upon x plus 6 upon y is equal to 1 upon 3. So this can be written as 9 upon x plus 18 upon y is equal to 1. This is the second equation. So on solving first and second equation, we get x is equal to 18 and y is equal to 36. So this implies that one woman can complete
a work, that is embroidery work, in 18 days, and one man can complete a work in 36 days. This is the answer. A railway half ticket cost half the full fare and reservation charge is same on half ticket as on full ticket. इसका मतलब half ticket का cost half है but reservation charge will remain same on both full ticket and half ticket. तो जो reservation charge full ticket पे लगता है वही reservation charge half ticket पे भी लगेगा. Now condition 1 says one reserved first class ticket from Mumbai to Ahmedabad cost rupees 216. तो एक टिकट का जो कॉस्ट है मुंबई टू अहमदाबाद इट इज 216 एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट. नाउ हियर वन फुल एंड वन हाफ टिकट कॉस्ट रुपीज 327. सो व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज? सो लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर इज रुपीज x and the reservation charge be rupees y. So case 1, one reserved first class ticket from Mumbai to Ahmedabad cost rupees 216. तो एक टिकट पे हमारे पास एक तो है बेस प्राइस प्लस रिजर्वेशन चार्ज, सो दिस इज इक्वल टू 216. दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन. x इज द बेस प्राइस, y इज रिजर्वेशन चार्ज, दोनों को मिला के टोटल हमें कितना पे करना है? 216 पे करना है. नाउ सेकंड केस, one full plus one half reserved first class ticket cost rupees 327. Now we have got here two tickets, one is full and one is half. तो full ticket पे लगेगा हमारा x plus y, fare plus reservation charge. Half ticket, for half ticket we will have to pay half the price plus the reservation charge will be y rupees, total 327. So let us take the LCM. This is your 2x plus 2y plus x plus 2y upon 2 is equal to 327. So this can be written as 3x plus 4y is equal to 654. This becomes the second equation. So on solving first and second equation, we get x is equal to 210 and y will be equal to 6. So basic first class full fare is rupees 210 and reservation charge per ticket is rupees 6. Question number 29. Ratio of income of two person is 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3. Each of them save rupees 200 per month. Find their monthly income. Now let the two person be A and B. Let the two person be A and B. So let us assume let income of A and B be rupees 9x and rupees 7x respectively. This is your respectively. Now similarly we can assume the expenditure also. Let the expenditure of A and B be rupees 4y and rupees 3y. तो अभी हमारे पास एक टेबल कुछ इस तरह से बन रही है. मान लीजिए A हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है, तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हमारे पास इनकम है 9x एंड 7x बिकॉज रेशियो हमारा क्या था? 9:7 का रेशियो था. एंड देयर इट इज 4y एंड 3y.
Now each of them saves rupees 200 per month. 200 की saving यहाँ पर भी है, 200 की saving यहाँ पर भी है. So we can say equations according to question. We can frame the equations now. तो इस पार्ट से इक्वेशन बनेगी हमारी 9x minus 4y is equal to 200. This becomes the first equation. Okay. Second case, इससे हमारी इक्वेशन बन सकती है 7x रुपीज़ उसकी इनकम है, उसमें से 3y रुपीज़ खर्च हो जाता है, तो बचा कितना 200 is the saving. So this becomes the second equation. Quite easy one. Now solving first and second equation, we get x is equal to 200 and y is equal to 400. So इनकम ऑफ ए निकाल लेते हैं हम लोग पहले. इनकम ऑफ ए दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 9x. 9x मीन्स 9 into 200, that is equal to rupees 1800. And income of B will be 9, that is your 7x. 7x means 7 into 200, that is equal to rupees 1400. This is the answer. A man sold a chair and table together for rupees 1520, thereby making a profit of 25% on the chair and 10% on the table. अगर 25% का प्रॉफिट चेयर पे है और 10% का टेबल पे है तो उसकी सेलिंग प्राइस टोटल दोनों की 1520 है. इन सेकंड केस वी आर गिवन बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर रुपीज 1535 he would have made a profit of 10% on the chair and 25% on the table. Find the cost price of each. So let the cost price of chair be rupees x, cost price of chair is rupees x, and cost price of table is rupees y. Now let us see the first case. Profit on chair is 25%. So the selling price will be equal to what? Selling price का फॉर्मूला होता है cost price plus profit. Okay. So chair की cost price हमारे पास कितनी है? Cost price है x और उसका profit कितना है? 25%. So this is your 25 upon 100x. So take LCM, you will get 125 upon 100x. This is the selling price of the chair. Now profit on table is 10%. So selling price of table will be equal to, the selling price के लिए हमारे पास cost price उसकी टेबल की है रुपीज़ y और उस पर प्रॉफिट है 10% का, तो 10 upon 100y. So this becomes 110 upon 100y. Now overall selling price यानी total selling price of chair and table is 1520. So I can write it like this. So selling price of chair is 125 upon 100x plus 110 upon 100y is 1520. So this is 125x plus 110y is equal to 1520 into 100, that is 15200. Now ये 5 से कैंसिल आउट होएगा, हमारे पास आएगा 25x plus 22y is equal to 30400. So this is the first equation. Now similarly case 2. Profit on chair, now it is 10%. So selling price of the chair will become its cost price plus profit. So cost price x, profit 10%, so 10 upon 100x. So that is equal to 110 upon 100x. Profit on table is 25%. So the selling price will be equal to its cost price plus 25 upon 100 y profit, that is 125 upon 100 y. So overall total selling price is 1535. So I can write it like this: 110 upon 100x
plus 125 upon 100y is equal to 1535. So this is equal to 110x plus 125y is equal to 153500. अब ये कैंसिल आउट होगा 5 से, तो 5 2 ज़ 10, 22x plus 25y is equal to 30700. This is the second equation. Now solving first and second, we get x is equal to 600 and y is equal to 700. So we can say cost price of chair is rupees 600 and cost price of table is rupees 700. Now in this question we are given on selling a tea set at 5% loss and lemon set at 15% gain, a crockery seller gains rupees 7. पिछले क्वेश्चन में अपने को सेलिंग प्राइस गिवन था तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया था. यहाँ पे हमें गेन दे रखा है तो वी विल बी कैलकुलेटिंग लॉस एंड गेन एंड ओवरऑल गेन इज रुपीज 7 in the first case. If he sells tea set at 5% gain and lemon set at 10% gain, he gains rupees 13. Find the actual price of each. So let the cost price of tea set be rupees x and cost price of lemon set is rupees y. Cost price of lemon set is rupees y. Now case 1. So here we have got there is a loss of 5% on टी सेट. सो 5% मीन्स दैट इज इक्वल टू, लॉस को मैं नेगेटिव में लिखूंगा तो -5 अपॉन 100x हो जाएगा. 5% किसका? कॉस्ट प्राइस का. सो दिस इज योर -5 अपॉन 100x. माइनस इसलिए क्योंकि लॉस है. सिमिलरली प्रॉफिट ऑन लेमन सेट इज गिवन टू अस एज 15%. सो दिस विल बी रिटन एज +15 या 15 अपॉन 100. उसकी कॉस्ट प्राइस है y. सो दिस इज योर 15 upon 100 y. Overall gain is net gain. Net gain means लॉस और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल हमारे पास आया है दैट इज योर गेन रुपीज 7. सो दिस इज इक्वल टू -5 अपॉन 100x प्लस 15 अपॉन 100y इज इक्वल टू 7. सो दिस इज इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना लॉस नेगेटिव में, प्रॉफिट पॉजिटिव में. So we will get -5 upon -5x plus 15y is equal to 700. So 5 से कैंसिल आउट होगा तो -x plus 3y is equal to 140. This becomes the first equation. Similarly, second case. Here we have got 5% gain on tea set. Gain on tea set is 5% and profit on lemon set is 10%. So tea set में 5% gain है तो मैं उसको लिखूंगा 5 upon 100x. 5% gain, 5% of the cost price. So 5% of the cost price is 5 upon 100x. Lemon set का cost price y है. So this is your 10 upon 100y. Overall gain is 13 rupees. So this will be equal to 5 upon 100x plus 10 upon 100y is equal to 13. So this is equal to 5x plus 10y is equal to 1300. So we get x plus 2y is equal to 260. This is the second equation. Now solving first and second equation, we get solving first and second equation, we will get x is equal to 100 and y will be equal to 80. So cost price of tea set is rupees 100 and cost price of lemon set is rupees 80. So this is the answer.
So next question is, while covering a distance of 30 km, Ajit takes 2 hours more than Amit. If Ajit doubles his speed, he would take 1 hour less than Amit. Find their speed of walking. So let the speed of Ajit be x km per hour and speed of Amit be y km per hour. तो हमने अजीत की स्पीड x ले ली और अमित की स्पीड y ले ली. Now case 1. Total distance travelled by both of them is equal to इंडिविजुअली इक्वल टू 30 किलोमीटर, यानी अजीत भी 30 किलोमीटर जा रहा है और अमित भी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. सो टाइम टेकन बाय अजीत विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर्स एंड स्पीड उसकी है x, सो दिस इज योर 30 अपॉन x आवर्स. सिमिलरली टाइम टेकन बाय अमित विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अगेन सेम 30 अपॉन y, सो दिस इज 30 अपॉन y आवर्स. Now Ajit takes 2 hours more than Amit. तो अजीत की स्पीड हमारे पास है 30 अपॉन x takes 2 hours more. 2 hours more means 2 plus 30 अपॉन y. शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग इसको, तो 30 अपॉन x माइनस 30 अपॉन y इज इक्वल टू 2. दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन. हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 से कैंसिल आउट करके. नाउ केस 2. अब सेकंड पार्ट में हमें कहा है अजीत डबल्स इज स्पीड. ठीक है, अजीत डबल्स इज स्पीड, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? न्यू स्पीड विल बिकम 2x. सो दिस इज योर 2x किलोमीटर पर आवर. नाउ अमित की स्पीड सेम रहेगी, तो टाइम टेकन बाय अजीत विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस सेम है 30 अपॉन 2x आवर्स, स्पीड उसकी डबल हो चुकी है. नाउ टाइम टेकन बाय अमित विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस सेम है उसकी स्पीड भी सेम है, सो डिस्टेंस इज 30 एंड उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं है, सो 30 अपॉन y आवर्स. नाउ द कंडीशन इज ही वुड टेक 1 hour लेस देन अमित. ही मीन्स अजीत विल टेक 1 hour लेस देन अमित. तो अजीत की स्पीड हमारे पास है 30 अपॉन 2x, 1 hour लेस देन अमित. 1 hour लेस देन अमित मीन्स 30 अपॉन y माइनस 1. ठीक है, तो इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 अपॉन 2x माइनस 30 अपॉन y इज इक्वल टू 1. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, 15 अपॉन x माइनस 30 अपॉन y इज इक्वल टू 1. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. So solving first and second, we get x is equal to 5 and y is equal to 15 by 2, that is equal to 7.5. So speed of Ajit is equal to 5 km per hour and speed of Amit is equal to 7.5 km per hour. This is the answer. So our next question is, the students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ रोज भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं. तो हम इन दोनों को x और y रेस्पेक्टिवली एज्यूम करते हैं. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो बी x, तो नंबर ऑफ रोज हम लोग ले लेते हैं y. दिस इम्प्लाइज दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी x इंटू y. ओके, एक रो में x स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास टोटल y रोज हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बिकम x इंटू y. नाउ द केस 1, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा है? देयर आर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो. इसमें क्या लिखा है हमको? 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो विल नाउ बिकम, हमारे पास ओरिजिनली हमने जो एज्यूम किया था वो x स्टूडेंट्स है, अब हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है, सो दिस बिकम्स x प्लस 3.
there would be one row less. There would be one row less. Now one row less का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ओरिजिनली y rows हैं, अब उसमें one less हो गई, so this is y minus 1. So obviously number of students will become now, so total number of students will be equal to x plus 3 students in a row and total y minus 1 row, so this is equal to y minus 1. So according to question, number of students will remain same, so x plus 3 into y minus 1, total number of students हमारे पास कितने हैं क्वेश्चन के अंदर according to our variables x and y, so total number of students is xy, so we are using it here xy क्योंकि सिर्फ रोज में कंडीशन चेंज हो रही है, टोटल स्टूडेंट्स विल रिमेन सेम इन द क्लास. ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स वाई गेट कैंसल्ड, तो हमारे पास जो आ रहा है वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड केस. नाउ इन सेकंड कंडीशन वी आर गिवन 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो. क्या कहा है हमें? 3 स्टूडेंट्स are less in a row, so new number of students in a row will become x minus 3 and there would be 2 rows more, so new number of rows will become y plus 2. So total number of students now will be x minus 3 into y plus 2. So this implies that और number of students will remain same in the class, so x minus 3 into y plus 2 will be equal to xy. ब्रैकेट ओपन करिए, xy plus 2x minus 3y minus 6 is equal to xy. xy and xy get cancelled, so our equation is 2x minus 3y is equal to 6. This becomes the second equation. Solving first and second, we get x is equal to we will get x is equal to as 12 and y will be equal to 15. No, sorry, it is 5. So total number of students is total number of students is equal to x into y, that is equal to 12 into 5, that is equal to 60. This is the answer. Now next question says a train covered a certain distance at uniform speed. If train could have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. If train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन वाले कंसेप्ट पर ही बेस्ड है. यहाँ पे हमारी स्पीड ट्रेन की इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है और टाइम भी वापस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो हम इन दोनों को x और y वेरिएबल एज्यूम करेंगे. सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड एंड टाइम टेकन इज y hours. Time taken to cover certain distance is equal to y hours. So total distance will become speed x time y, so this is equal to x into y, speed into time, so this is equal to x into y. Now case 1, we are given here train could have been 10 km per hour faster. ये फर्स्ट कंडीशन चेक कीजिए आप इसकी, ट्रेन वुड हैव बीन 10 km per hour faster, यानी स्पीड चेंज हो रही है, सो द न्यू स्पीड विल बिकम x plus 10, so this is equal to x plus 10 km per hour. It would have taken 2 hours less. It would have taken 2 hours less. So this is equal to y minus 2. So distance covered will be equal to, so the new distance, अब हमारा स्पीड और टाइम चेंज हुआ तो डिस्टेंस भी एक नया वेरिएबल में आएगा, x plus 10 into y minus 2, but according to question distance remains same, so we can write it like this, x plus 10 into y minus 2 is equal to xy. So here it is xy minus 2x plus 10y
minus 20 is equal to xy. Xy and xy get cancelled on left LHS and RHS. So this is minus 2x plus 10y is equal to 20. So 2 से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास आएगा minus x plus 5y is equal to 10. This is the first equation. Now similarly case 2. Now in second case we are given if train was 10 km slower, okay, slower by 10 km per hour. So the new speed will be equal to, new speed of train is x minus 10 km per hour. It would have taken 3 hours more. So new time taken will be equal to y plus 3 hours. So the distance will be equal to distance covered speed into time. Speed हमारे पास है x minus 10, time taken है y plus 3. So this is equal to y plus 3. So we can write it like this: x minus 10 into y plus 3 is equal to xy. ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू xy. xy एंड xy गेट कैंसल्ड और 30 को उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30. नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x is equal to x is equal to 50 and y is equal to 12. So total distance covered by the train will be equal to distance covered by train will be equal to x into y, यानी 50 into 12, that is equal to 600 kilometer. This is the answer. So total distance of the journey is equal to 600 kilometers. Now next question is, it can take 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long will it take for each pipe to fill the pool separately? So let us assume the capacity of the pool be 1 unit. 1 unit का मतलब इसमें 1 unit water इसमें आ सकता है. टोटल कैपेसिटी को हमने 1 unit मान लिया. Let the time taken by larger pipe को मैं पाइप A बोलता हूँ सपोज. तो पाइप A takes x hours to fill the pool. ठीक है, यानी x hours में वो पूरा pool fill हो सकता है. तो 1 hour में फिर कितना fill होएगा? तो पाइप इज 1 hour वर्क विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x, क्योंकि हमने एज्यूम किया 1 यूनिट और x आवर्स में वो पूरा फिल कर रहा है. सो दिस इज योर 1 अपॉन x पार्ट ऑफ द पूल फिल्ड. सिमिलरली लेट अस एज्यूम स्मॉलर पाइप बी, पाइप B. स्मॉलर पाइप को हमने पाइप B नाम दिया है, ठीक है, और इसको y आवर्स लगते हैं पूरा फिल करने में. तो टाइम टेकन बाय पाइप B इज इक्वल टू y आवर्स. तो इट्स 1 hour वर्क विल बी इक्वल टू, पाइप बीज 1 hour वर्क विल बी इक्वल टू 1 यूनिट टोटल है, उसमें y आवर्स लगते हैं तो 1 अपॉन y हो जाएगा. नाउ केस 1, इट टेक्स 12 hours टू फिल द स्विमिंग पूल यूजिंग बोथ द पाइप्स. तो दोनों पाइप 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, दोनों साथ में चालू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और दोनों ओपन रहते हैं 12 घंटे के लिए. तो स्विमिंग पूल पूरा फिल हो जाता है. तो पाइप इज, अब तो 12 घंटे में कितना वर्क होएगा? 1 hour में 1 बाय एक्स है, तो 12 hours में 12 इंटू 1 अपॉन एक्स, दैट इज 12 अपॉन एक्स हो गया. सिमिलरली पाइप बीज 12 hour वर्क विल बी इक्वल टू 12 इंटू देयर 1 hour वर्क, दैट इज 1 अपॉन वाई. सो दिस इज योर 12 अपॉन वाई. अब दोनों मिलके 12 घंटे में पूरा पाइप फिल कर, पूरा पूल फिल कर देते हैं. सो दैट इज योर 12 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई. पूरा पूल फिल हो रहा है तो दैट इज इक्वल टू 1. This becomes the first equation. Next, in the second case we are given pipe larger diameter, यानी pipe A is used for 4 hours, okay, and pipe of smaller diameter is used for 9 hours. Only half of the pool can be filled. ठीक है, तो pipe A is 4 hour work will be equal to 4 into 1 upon x, that is equal to 4 upon x. Pipe B is 9 hour work will be equal to
9 into 1 upon x, that is equal to 9 upon x, 9 upon y, sorry. This is y here. So this is y here and y here. Now only half of the pool is filled. So we can write it like this: 4 upon x plus 9 upon y. और पहले वाले में पूरा पूल फिल हो रहा था, हमने 1 यूनिट लिया था. अब यहाँ पे 1 यूनिट में से हाफ यूनिट ही फिल हो रहा है. सो दिस इज इक्वल टू हाफ. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 upon x plus 18 upon y is equal to 1. Solving first and second, we get x is equal to 20 and y is equal to 30. So we can say pipe of larger diameter fill the swimming pool in. Pipe of larger diameter fills the pool in 20 hours, and pipe of smaller diameter fills the pool in 30 hours. This is the answer.